Hello students, this is our third chapter, Agile Software Development. Okay, so what is mean by the Agile then? Flexible, quickly, performing quickly. So Agile methodology is nothing but readiness for a motion, or that is quickly reacting motion, nimbleness, activity, uncertainty and the motion. That is nothing but whenever any software or whenever anything which is replying quickly, that is mean by the agile. Okay, that is mean by the agile. Now what is mean by the agility? The ability to both create and respond to change in order to profit in a turbulent business environment. Agility is nothing but the uh, methodology which is reacting quickly, which having the agile or which is performing in a agile mode. So companies need to determine the amount of agility they need to be competitive. That is, amount of agility is nothing but then companies need to determine the amount of agility. That is nothing but how the company are quickly responding to the customer requirement. That is nothing but the amount of agility of that company. What does agility? So agility will create and respond. That is nothing but creating some methodology and giving the response to change in order to profit in a business. Okay. So now we'll see this. What is this agile methodology in context of our software development? Okay. Agile software development is nothing but a conceptual framework. Software development, we have seen that software development is nothing but it is a process, it is a flow. And what is meant by the agile software process? That is nothing but to promote the development iterations. So in last lecture we have seen the conventional last model. What is that last convention model? Yes, कौन सा था? Yes. What happened? फर्स्ट स्लाइड ही दिख रहा है। दोनों भी क्लास में फर्स्ट स्लाइड ही दिख रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। So the first is agile. Agile is nothing but we have seen that activity or the numbleness, that is nothing but how the process is responding quickly. Agility is nothing but again the ability to both create and respond to change in order to profit. That is nothing but how the company need to determine about amount of agility. That is nothing but how the companies is responding to the customer requirement and how quickly they are responding. That is nothing but amount of agility. So in our context we will see this. Second. In our context, that is nothing but software development process, how this agility or agility will work. That is nothing but first is definition, is a conceptual framework of software engineering. Again, whenever we are saying that it is a software development, then it is the whole process from what? From customer requirement to giving the whole project to the customer. So software development, this is a whole project, and if we apply the agility functionality to the software development, that is nothing but software engineering that promotes development iteration throughout the life cycle of the project. So in last lecture, that was the conventional software development process. Okay, so उसमें हमने last वाला कौन सा पढ़ा था? Which was the last? Prototyping. Yes, yes. So in that prototyping model, what we have seen that the customer is making, the developer is making basic the project, and on that basic project they are working, updating it. Okay, that is nothing but they are not providing the
customer satisfaction at every step. Okay, so in agile software development, here iteration throughout the life cycle. So iteration throughout the life cycle, इसका मीनिंग ही क्या है? agile, this is the agile functionality. So हर एक लाइफ साइकिल में, दैट इज नथिंग बट फर्स्ट लाइफ साइकिल कंसीडर है हमारा requirement specification. So in that requirement specification, unless and until, जब तक कस्टमर सारे के सारे requirements प्रॉपरली बता नहीं देता, तब तक वो प्रोसेस हमें इटरेटिव मैनर में करना ही है. गॉट दिस मीनिंग ऑफ इटरेशन थ्रू आउट द लाइफ साइकिल. हाँ, so whenever we are saying that the software development is agile, that is nothing but at every life cycle developer is providing the iterations. So software developed during one unit of a time. So इसमें क्या होता है? software development is software developed during one unit of a time is referred to as iteration. एक बार एक मॉड्यूल बनाया, that is nothing but one iteration which may last from 1 to 4 weeks. So ये इसके लिए कितना टाइम लगता है? 1 to 4 weeks to make a one unit. That is nothing but one unit is nothing but the whole project get divided into the multiple small part and at a time only the one module is implemented. So agile methods also emphasizes working software as the primary measure of a process. Primary measure of a process is nothing but, that is nothing but as per the customer requirement, developer is going to start from the basic. जैसे प्रोटोटाइप में कैसे होता था कि पहले ही कुछ एक बेसिक मॉड्यूल है, उस पे डेवलपर विल गोइंग टू अपडेट इट. ओके, बट यहाँ पे क्या होगा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, agile software development में developer is going to implement from the basic. Got this different? Yes. So next, these are the characteristics of agile software methodology. So as we are comparing this with the traditional or conventional software models. So first is, it is a lightweighted methodology. Why? Because यहाँ पे कुछ confusion नहीं है कि हमें क्या करना है और developer को क्या करना है. एक बार whenever the developer is going to start the implementation, उसको at a time only one unit he need to develop, and on that one unit जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, ही नीड टू iterate it or update it until the customer satisfaction. Then small to medium size teams. Why? Because एक टीम एक ही मॉड्यूल पे वर्क करेगी. Which and the changing requirements, as per the customer's changing requirement, he need to update his project again according to the changing techniques. जैसे भी टेक्नोलॉजी अपडेट होती है आपके कोई भी सॉफ्टवेयर, व्हेनेवर यू आर कंसिडरिंग, अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी अपडेशन आपके सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं. यस, और पुराने ही रहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है. हाँ, अपडेट होते हैं. सो दैट इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टेक्नोलॉजी customer needs the updation. So developer is providing that updation according to the technique also and according to the customer requirements also. Again, agile software development is providing simple design and minimal system into production. Got this? These are the characteristics. Again, modularity, iterative, that is nothing but these characteristics I have written in a one word. Okay, now we will see the what is the importance of this. Okay, पहले तो इतने सारे मॉडल हमने पढ़े, iterative model, prototyping model, waterfall model. So why we need this agile model, okay, instead of that models? That is nothing but the deployment of a process is quicker. Deployment of a process is nothing but when we can deliver the project quickly to the customer. Thus it helps in increasing the trust of the customer. Okay, जैसे कि हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर agile सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस यूज करके वी आर डिलीवरिंग और डेवलपर इज डिलीवरिंग that project very quickly. So that's why it helps to increasing the customer trust.
Okay, it can better adapt to rapidly changing requirements and respond faster. Why? Because according to the changing technology, we are updating our software, or developer is updating their software. That's why it is adapting rapid changing requirements and respond faster. Next is helps in getting immediate feedback which can be used to improve the software in the next increment. So यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने बताया, हर एक लेवल पे और हर एक इटरेशन पे कस्टमर विल गिव अस द फीडबैक. ओके, दैट्स व्हाई इमीडिएट फीडबैक हुआ. At every step customer is giving the feedback, that is nothing but immediate feedback from what customer, so that so that developer can improve the software in the next increment. Got this? Okay, next is people, not process. People and interaction are given in higher priority. People and interaction is nothing but developer and customers का interaction directly दिया है. Okay, that's why this is a high इसमें higher priority है. That's why this is a beneficial. Why? Because यहाँ पे प्रोसेस people पे वर्क कर रहा है, that is developer and customer का communication directly है at every steps. Okay, so people and interaction are given in is a higher priority rather than process and tools. Then continuous attention to the technical excellence and the good design. यहाँ पे continuous attention है किसका? Customer का. Why? Because customer is giving feedback at every iteration. Got this? पहले जितने भी हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़े उसमें ऐसा था कि एट एवरी स्टेप वी आर नॉट टेकिंग द कस्टमर्स व्यूज, ओके, और कस्टमर फीडबैक. पहले हम लोग हमारे अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट हमारे सारे सॉफ्टवेयर मॉडल्स पूरे के पूरे बनाते थे. उसके बाद में कस्टमर के फीडबैक लेते थे और उसमें चेंजेस अप्लाई करते थे. गॉट दिस? Basic difference between agile methodology and the previous all methodology. Previous all methodology में we have done that we have implemented whole project at once, and after that after testing, performing the testing and all these things, we are going to deploy the project to the customer, and after that customer will give the feedback. But इसमें वैसे होता है नहीं. इसमें क्या होता है, at every step customer is giving us the feedback, or customer is giving the feedback to the developer, so that developer can change or update the software at the very next iteration. Got this? So here the difference is given of perspective software and the agile software. So this first 2 points is for the perspective software. So these models, those which prescribe the components which make a software module, including the activities and all these things. So we have seen that जितने भी previous वाले software models हमने पढ़े उसमें क्या था, modules थे including activities, input, output, all these things. But software agile software में वैसा है नहीं. Agile software में क्या है, have a heavy focus on change in the software engineering process. जैसे कि according to the technology we need to update our software, ये main difference है. But जो भी previous conventional और perspective software है उसमें वैसे होता है नहीं. उसमें we are giving the assurance of the quality, or according to the customer requirement we have made this. Got this difference? Next, we will see this agility principle. There are 12 agility principles. So we will see this one by one. First one, our highest priority. Our means developers higher priority. और ये principle ऐसे ही अगर आपको एग्जाम में आए हैं agility principle, तो as it is words में लिखने हैं. Okay. So our highest priority is to satisfy the client through a early and continuous delivery of valuable computer software. जैसे कि अभी हमने पढ़ा, that is agility software development providing
customer satisfaction, satisfy the client, that is customer satisfaction at every step by continuous delivering of valuable computer software. How? Because every unit में customer के साथ communication होगा. Then it welcome the dynamic necessities even late in development. अगर customer को प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस भी चाहिए, then also developer can do that. Why? Because at every step customer is giving their review to the project, that's why. Then agile process harness modification for the customer competitive advantages. जैसे कि अभी हमने पढ़ा, सेम ही सबका मीनिंग वही है बेसिकली कि अजाइल मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि एट एवरी स्टेप कस्टमर इज गिविंग द फीडबैक सो दैट टू मेक अ चेंजेस इन यूनिट or the in every single iteration is very feasible to the developer. Third is deliver operating computer software often from a pair of weeks to a couple of months. जैसे कि अभी पढ़ा हमने 4 week to 1 month में पूरा का पूरा एक इटरेशन कंप्लीट होता है. सो एक मंथ में ही कस्टमर को एक मॉड्यूल मिल जाएगा, बेसिक मॉड्यूल. सो विथ अ प्रेफरेंस टू अ शॉर्टर टाइम स्केल. सो शॉर्टर टाइम स्केल मतलब एक मंथ में ही पूरा का पूरा मॉड्यूल अगर कस्टमर को मिल रहा है, सो कस्टमर कैन गिव देयर रिव्यू ऑन दैट मॉड्यूल. देन बिजनेस इंडिविजुअल्स एंड डेवलपर शुड वर्क अलोंग डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट. जैसे कि पहले हमने पढ़ा था, और जितने भी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स पढ़े थे उसमें क्या था, वी नीड टू फॉलो अ फ्लो. यहाँ पे फ्लो फॉलो करना है हमें नहीं. So that is business individual also and developer also will work simultaneously on a same project. So that's why the duration of implementation will get reduced. This is the fourth principle. Next principle is the fifth principle. The build comes around the actuated people. That is nothing but जो भी implementation है directly customer को deliver होता है. Offer them the setting and support they have and trust them to urge the task done. यहाँ पे क्या होता है सॉरी, एक बार प्रोसेस और वन सिंगल इटरेशन अगर कंप्लीट हो गया, उसके बाद में दैट सिंगल इटरेशन विल गेट डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द कस्टमर. सो यहाँ पे एक्चुएटेड पीपल यानी क्यों कौन होगा, क्लाइंट और द यूजर. And client and user directly will give the feedback. Next is the foremost economical and effective methodology. Why it is economical and effective? Because it takes only the 1 month duration to implement whole project. Why? Because whole team is working simultaneously on a same iteration. Then working computer software is primary life of process. Why? Because यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे पूरा का पूरा कंसंट्रेशन होता है. अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड टेक्नोलॉजी डेवलपर नीड टू अपडेट देयर प्रोसेस और प्रोजेक्ट. सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रही हूँ इतना देर? Next is agile processes promote property development. Property development is nothing but the sponsor, developer and users got to able to maintain a relentless pace infinitely. That is nothing but यहाँ पे क्या होता है, the customers are nothing but the users can give the feedback lifetime cycle, lifetime पे. Okay, so that in a definition only we have seen that here. So in definition only we have seen that iteration throughout the life cycle of the project, that is nothing but जब तक पूरा का पूरा project नहीं बनता, they can give the feedback. So that's why it is a lifetime project. This was the 8th one. Infinitely they can give the feedback to the developer. Next is 9th one,
continuous attention to technical excellence and smart style enhances nimbleness. That is nothing but agile, yani ki just now in characteristics only we have seen that it work on a changing technology or changing techniques. That is nothing but this agile methodology provides us the technical excellence. Why? Because according to the changing technology or changing techniques, it updated their project. Then simplicity, the art of maximizing the number of work done is essential. यहाँ पे हमने कुछ प्रोसेस फ्लो पढ़ा क्या? नहीं. जैसे रिक्वायरमेंट प्रोसेस, देन डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे प्रोसेस हुए यहाँ पे नहीं. यहाँ पे क्या हुआ? जस्ट डायरेक्टली टेक डाउन द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन, and at the every iteration take down the feedback from the customer. So that's why this design methodology is simple. It provides us the simplicity. How? By giving us the maximizing the number of work done. Then the next, the most effective architecture necessities and styles emerge from the self-organizing groups. That is nothing but self-organizing group matlab developer is itself going to uh, give the his requirement, and according to that requirement developer will implement that project. And the last principle is at regular interval the team reflects on a way to become simpler. That is nothing but हर एक iteration के बाद क्या होगा? Customer and developer का communication होगा. So that is nothing but regular interval में the team reflects the way of become simpler. So that's why this whole process will work in a time, a minimum time, that is a 4 month to 1 week में ये पूरा का पूरा process बन के complete होगा. And after that that is nothing but it will complete one iteration, and in that one iteration by taking a customer review developer can change their project. So got this all 12 principles. कॉमन सेंस यूज करके भी आप ये 12 प्रोसेस लिख सकते हो और 12 प्रिंसिपल्स लिख सकते हो अगर एग्जाम में आए तो. गॉट दिस ऑल दिस 12 प्रिंसिपल बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का. सो ठीक है. Everyone got this agile methodology क्या है, उसके characteristics क्या है, and why we are using this agile methodology instead of this previous models. Yes, okay. So we will stop here because okay, yes. 9th one, okay. That is continuous attention to the technical excellence. So just now in a yes, this one. Huh. Simplicity, that the art of maximizing the number of work not done. That is nothing but यहाँ पे क्या होता है कि directly from the by taking a customer requirement they are going to start the implementation. So यहाँ पे maximizing the number of work not done. That is nothing but जितना भी work नहीं for example, how can I tell you? Wait second, I'll give you the example. जैसे प्रीवियस जितने भी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स थे, व्हाट हैव सीन दैट वी नीड टू फॉलो सम फ्लो, दैट इज कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑल दिस स्टेप्स. यहाँ पे वो सारा वर्क ये सारे के सारे स्टेप्स है वो निकल जाएंगे. डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन. ओके, सो जो भी वर्क नॉट डन है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा. डायरेक्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन. जैसे कि जैसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट आ गए, डायरेक्टली क्या स्टार्ट होगा? इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा. सो जो वर्क नॉट डन है वो मैक्सिमाइज हो रहा है ना हमारा, बट इससे क्या हो रहा है कि वी कैन डायरेक्टली प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेड कस्टमर और प्रोडक्ट टू द कस्टमर. ये समझ में आया?
सबको। प्रोसेस सिंपल क्यों हो रहा है? जैसे कि मैंने आपको कुछ वर्क दे दिया, आपने कुछ उसका अल्गोरिदम नहीं लिखा, सूडो कोड नहीं लिखा, आपने अकॉर्डिंग टू द माय रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट बनाना और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया। आपने कुछ उसका फ्लो चार्ट नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। सो इससे क्या होगा, जो भी वर्क नॉट डन है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, बट उससे क्या हो रहा है, मुझे जो भी आउटपुट चाहिए वो जल्दी मिलेगा ना। आप जो नॉट नेसेसरी पार्ट है डिजाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज आपको फ्लो समझ में आ गया है, तो डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रहे हो। तो अगर आपको समझ में आया मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है, आपने इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया, तो आप क्विक इम्प्लीमेंटेड करके मुझे प्रोग्राम दे सकते हो। सो दिस इज द सिंप्लिसिटी। गॉट दिस नाइन्थ प्रिंसिपल एवरीवन? हाँ, विच वन? 11? हाँ, ही इज आस्किंग 10th और 11th? 11th one ना, हाँ। द मोस्ट इफेक्टिव आर्किटेक्चर नेसेसिटीज एंड स्टाइल्स इमर्ज फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप, दैट इज नथिंग बट, कंसीडर करो जो भी बेसिक आर्किटेक्चर नेसेसिटीज एंड स्टाइल्स है वो तो सारे के सारे प्रीवियसली अवेलेबल होंगे। उसके लिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन डेवलपर इज यूजिंग द टूल्स डायरेक्टली, जो भी अवेलेबल टूल्स है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, नो नीड टू उसके लिए अलग से कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। सो दैट इज नथिंग बट इफेक्टिव आर्किटेक्चर नेसेसिटीज एंड स्टाइल्स जो भी है इमर्ज फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप, जो भी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मतलब पहले ही इम्प्लीमेंटेड टूल्स है वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इन अवर प्रोजेक्ट ओनली। गॉट अस? हाँ, और अगर इसी में ये जो भी सारे प्रिंसिपल्स है उसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, आई अपलोड वन नोट्स फॉर दिस, उसमें एक्सप्लेनेशन भी होगा आगे, तो आपको वो एक्सप्लेनेशन रीड करके भी पता चल जाएगा। अगर मैंने अभी जो भी पढ़ा है उसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन है, आप एक बार उसमें से गो थ्रू कर लो, और अगर उसके बाद में भी कुछ कंफ्यूजन तो मुझे फिर से पूछना। इज दैट क्लियर? हाँ। सो नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने बोला ना कि मैं मंडे करूंगी, मेरा लास्ट वीक एग्जाम था ना, मैंने बोला था शायद आपको, है ना? तो आज मैं वो लास्ट वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर भी अपलोड कर दूंगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?